Hey everyone, my name is Farhan and I am a student of grade 9 from Maharashtra. So friends, आज डेट है 28 फरवरी 2022 और आज है साइंस डे. तो मैं अभी फ़िलहाल अपने स्कूल के पास हूँ, आप देख सकते हो. यो गाइस, तो आज बेसिकली मैं आपको अपना स्कूल टूर कराऊंगा और आज जो भी मतलब आज साइंस डे है तो आज स्कूल में साइंस जो एग्जीबिशन होता है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. That you pull me through, I give it all to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited, you wanna hold me close, but I know what you up to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. त्यात काहीतरी घालतात ते बॉल काय करते. I will rotate the marble. I will rotate the marble. It will not detect. When I will rotate the metal on that sheet, it will suddenly detect. But when I give it a direct impact, it acts like a ball. But when I submerge it, my fingers gently into it, it acts like a liquid. So this is called the physical change in matter. Because of here we have corn flour and water. Just corn flour and water, two simple substances. We have mixed them together. This acts like a solid when we give it an impact because of its density. The corn flour is used for density. We all know in kitchens everyday life. So here the solute in which is corn flour, it is in high quantity, so it has more density. But when we just give it a simple pressure on one point, it acts like a liquid. फ्रेंड्स अभी टाइम है 3:30 और अभी मैं स्कूल के बाहर हूँ और स्कूल में तो मोबाइल अलाउड नहीं था इसलिए मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया. फिर भी कुछ जो साइंस के जो मॉडल्स थे उसके मैंने शॉर्ट क्लिप बनाए हैं और वो आपने देख लिए हैं. तो गाइस भी अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.